बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्नर पॉइंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 1 जिसका सब्जेक्ट कोड इको 606 है, इसके असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसकी जो लास्ट सबमिशन डेट है वो 23 फरवरी 2022 है। तो इसका टोटल मार्क्स 10 है। क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। तो चलें हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बीफ इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ बीफ पीबी, प्राइस ऑफ मटन पीएम एंड इनकम वाई। कह रहे हैं कि जो हमारे पास बीफ का फंक्शन जो है, क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन है, वो किस चीज का फंक्शन है? उसमें बीफ की प्राइस भी शामिल है, उसमें मटन की भी जो उसका सब्स्टिट्यूट है, और इनकम की। कह रहा है फाइंड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बीफ इफ पीबी इज इक्वल टू 100, पीएम इज इक्वल टू 250 एंड वाई इज इक्वल टू 5000। कह रहा है अपने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करनी है, जबकि आपको बीफ की प्राइस, मटन की प्राइस और इनकम दी गई है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है गिवन द क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन QD, ऊपर उसने 20 स्पेसिफाई कर दिया था, ये जनरलाइज कर दिया QD लिख के। 250 माइनस 3P प्लस 0.05 Y। फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऊपर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे, अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एट P इज इक्वल 25 एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट Y इज इक्वल टू 2200। तो 2.5 के मार्क्स हैं। तो बाकी आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। तो चले हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये जो हमें बीफ का क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन दिया गया है 5200 माइनस 1.5 पी बी प्लस 2.5 पी एम प्लस 0.25 वाई, इसको मैंने क्वेश्चन 1 करार दे दिया है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई मिस्टेक हो जाए तो डेफिनेटली उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। तो ऐसे मिस्टेक एरर्स हो सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिटरमिन करनी है। तो मैं EDY यानी इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, EDY का मकसद ये है is equal to percentage change in quantity demanded of beef and percentage divided by percentage change in income. तो percentage change in quantity demanded DQ over QB divided by DY over Y। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन साइन में, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा Y over QB। अब इस क्वेश्चन में जो हमने क्या, एक ये वाला पोर्शन डिटरमिन करना है और एक ये वाला पोर्शन डिटरमिन करना है, यानी डी क्यू बी ओवर डी वाई। सो फॉर डी क्यू बी ओवर डी वाई, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली, बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव फाउंड 3 वेरिएबल्स, प्राइस ऑफ बीफ, प्राइस ऑफ पेमेंट एंड इनकम एज वेल। सो यहाँ हम जो टेक्निक यूज करते हैं डिफरेंशिएशन की, उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। वो इसलिए हम करें क्योंकि हमने इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू इनकम डिटरमिन करनी है। तो अदरवाइज फिर हमारे जो दूसरे रेस्ट ऑफ द 2 वेरिएबल्स हैं बिकम कांस्टेंट। तो ये मैंने इसको क्वेश्चन का डी ओवर डी क्यू, या मैंने क्वेश्चन 1 लिखी 5200 माइनस 1.5 पी बी प्लस 2.5 पी एम प्लस 0.25 वाई। तो मैंने आपको बताया क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो रेस्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स बिकम कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस पी एम 0 प्लस, तो वाई डी वाई ओवर डी वाई इज इक्वल टू 1.25 आ जाएगा। तो हमारे पास डी क्यू बी यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी, जो हमारे पास उसका डेरिवेटिव है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of B with respect to change in Y is equal to 0.25 है। तो अब हमने
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बीफ डिटरमाइन करनी है, क्योंकि हमें प्राइस ऑफ बीफ, प्राइस ऑफ मटन और इनकम दी गई है. देन what we are going to do, we are going to place all these values in equation 1 to obtain the value of QB. So I have done this. 5200 minus 1.5, as PB price is 100 plus 2.5 into price of mutton, which is given 250 plus 0.25 into income 5000, which is also given. So going with the plus multiplication operations, we get these values: minus 150 plus 625 plus 1250. After plus and minus, I will get the quantity demanded of beef, 6925. So finally we have got the quantity demanded of beef, which is equal to 6925. So in next step, we are going to plug in all the concerned values in the equation of elasticity of quantity demanded of beef with respect to y. 0.25 is equal to into 5000 divided by 6925 क्वांटिटी. सो हमारे पास जो वैल्यूज आई है, फाइनल इनकम इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर बीफ 0.18 है. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं. अब उसने हमें एक जनरलाइज क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन दिया है जिसकी इक्वेशन ये है 250 माइनस 3p प्लस 0.05y. इसको हमने इक्वेशन 1 लेबल किया है और साथ ही हमें प्राइस की और इनकम की फिगर दी है 25 और 2200. तो अब हमने क्या करना है, अब इसके दो पोर्शन थे एज वी हैव रीड इट इन फ्यू मिनट्स अर्लियर. सो पहले क्या हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन करनी है. उसका फॉर्मूला यह है कि डी क्यू बी अवर डी पी इंटू पी अवर क्यू. तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो डी क्यू बी अवर डी पी है और क्यू एस को हमने डिटरमाइन करना है, यानी क्यू डी. तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू पी पार्शियली. फिर पार्शियली हम कर रहे हैं क्योंकि we have two variables on the right hand side, which is price and income. So at the same time we can't differentiate, so we are going to use the technique of partial differentiations, which allows us to keep the other variables constant. Which one? Income in first part. So that's why I am going to differentiate partially with respect to P, because I am going to interested to find the elasticity of price for quantity demanded. So what happened? So apply the technique, partial QD our partial P is equal to partial our partial P into 250 minus 3P plus 0.05y. As we have discussed, in case of partial differentiation technique, only the concerned variables remains active and other remains constant. Here P is active and we keep y as constant, therefore it becomes 0, and 250 is already constant, so it become also 0, which remains minus 3, because the partial P our partial P is equal to 1. So now the question is elasticity of P is equal to partial QT over partial P into P over Q. By putting the required values in this equation, we will get the value of EP. Minus 3 into 25, which is given, and Q is equal to 285, which we have determined here by putting all values of P and Y respectively. So now we are going to pass on the second task of the question number 2, where we are going to determine the elasticity of income elasticity of the given quantitative functions. So what happened, in the same equation we have replaced this denominator with partial y, which is before partial p. So again we are going to differentiate equation 3 with respect to now y. So it means p also becomes constant. So as the because of the constant status of p, it becomes equal to 0,
and active variable is y. So dy partial y over partial y is equal to 1. 1 into 0.05 is equal to 0.05. Now we have all the required values of the elements of the equation 3, which is this. So we are going to plug in all these values in equation 3 to reach the required value of Ey. So 0.05, which is a value of the partial QD, our partial y, into this is the amount of income and this is the quantity demanded. So lastly or resultantly we will get the 0.39 values. So at the end I hope you will enjoy this session, and this answer will be beneficial for you. If you found any mistake or error, or you want to contribute some your opinion or your knowledge, please drop your suggestions in comment sections. I will appreciate your concerns and your cooperation. Thanks for watching. Assalamu alaikum.